Now let us take some advanced problems on JEE advanced base. This kind of question can be given to you comprehension type questions. Sometimes you get bit lengthy questions as well, or for concept clarity it is helpful. So let us take one question given here. Question आप लोग लिखिए पहले. Try yourself, then see solutions. Question क्या लिखिए? Determine the concentration of Ag plus AgS2O3 minus AgS2O3 whole to 3 minus AgS2O3 whole twice 3 minus thiosulfate ions S2O3 2 minus and AgS2O3 3 5 minus in a solution which is 1 molar in a solution which is 1 molar in AgS2O3 whole thrice 5 minus, which is 1 molar in AgS2O3 whole thrice 5 minus. Given for the three expressions for the complex dissociation, we are given three expressions. AgS2O3 3 5 negative and dissociate with AgS2O3 2 minus and 2 3 minus plus S2O3 2 minus K1 is 0.2 molar units दिया है उसका. In second step, this dissociate to give AgS2O3 negative plus S2O3 2 minus thiosulfate ions, and last step, this will further dissociate to give Ag plus S2O3 2 negative and K3 values 1.5 into 10 to the power minus 9. Okay, you solve this question yourself. It is requiring concentration of Ag plus thiosulfate ions, concentration of AgS2O3 minus concentration of AgS2O3 2 3 minus and concentration of AgS2O3 3 5 minus. Okay, try this question yourself, take your time and then come on solution part. Now coming on solution part, to solve this question we can take in this question some valid approximations. Like first can take here, we are given the concentration of this complex how much? 1 molar. So x mole per liter dissociate, it gives x moles per liter, x moles per liter. Say in this case the value of K1 is quite high, 0.2. That means compared to 1 here x may not be negligible. Compared to 1 here x is not negligible. Since K value is higher, K1 is higher K1 indicate reaction will go to forward direction to sufficient extent. That means compared to 1 x is not negligible. 1 क्यों लिखा दिया है क्वेश्चन में? 1 molar. Concentration given of this complex is 1 molar. So from K1 expression we can find this two values. कितना आएगा? X square by 1 minus x and K1 is how much given? 0.2. On solving from here we get the value of x. What is x here? आप चेक करके निकाल के x should come 0.358 molar. The value of x should be coming 0.358 molar. Then this is same as concentration of AgS2 whole thrice S2O3 whole twice 3 minus is also equal to concentration of thiosulfate ions. It is same as concentration of AgS2O3 whole twice 3 minus and S2O3 S2O3 2 minus. Concentration आपका आ जाएगा इतना. Then what is concentration of AgS2O3 3 5 minus, it is how much? 1 minus x. कितना दिया है? x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1 minus 0.358, this value comes 0.642 molar. तो concentration will come of AgS2O3 3 5 negative ion is 0.642. अब देख लीजिए निकाल के सॉल्व करने से
will come 0.642. So we got a 3 answer right now. We got the answer S2O3 2 minus this compound we have got. We have got the concentration of this one also. We got 3 answers. Now we can have one doubt कि सर यहाँ से तो आया, ये जो आपके आयंस हैं थायोसल्फेट आयंस यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी आएंगे. हमने फर्स्ट को क्यों लिखा है और क्यों नहीं लिखा कंट्रीब्यूशन? सिंपल लॉजिक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सेकंड थर्ड रिएक्शन क्या है. द वैल्यू ऑफ के K2 और K3 आर क्वाइट लो. वैल्यू ऑफ K2 और K3 इज वेरी लो, क्वाइट लोअर. सो व्हाट हैपन? Concentration of thiosulfate ions from second and third step are very low. Second reason, because they are higher concentration of thiosulfate ions from step 1. So reaction second and third reactions are going in the backward direction. When the reactions are going in the backward direction, what happen then? Concentration of thiosulfate ions from second and third reaction will decrease further. Already कम था और कम होगा. क्यों? Because of this common ion effect. तो when there is common ion effect, it decreases. तो हम क्या करेंगे इसमें? Concentration of thiosulfate ions we will take common, same in all the expression, equal to how much? 0.358 molar. Same the concentration of AgS2O3 whole twice 3 minus will be taken same. Like in second case, from second expression we can find the concentration of AgS2O3 minus. ये कितना है concentration यहाँ पर? जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पर रहेगा x. It's a minus y amount. ये कितना को देगा? X plus y, but it is nearly x only because y is much lower. This can be taken also nearly x only since y is very less. And decrease because of common ion effect. तो हम क्या करेंगे इस केस में? We can take K2 expression कितना होगा? Concentration of AgS2O3 minus into thiosulfate ions X by concentration of AgS2O3 3 negative is how much? X. X cancel out, so concentration of AgS2O3 negative ion will be how much? Same as K2 is equal to 3.3 into 10 to the power minus 5 molar. The concentration will come of AgS2O3 negative ion same as K2. So you can see comfortably that compared to 0.358, this value will be negligible. So we have written this value a valid approximation. We have taken here a valid approximation और करेक्ट आपका है. तो ये हमारा आ गया इसका कंसंट्रेशन. नाउ इट इज नॉट टू अस, वो भी माइनस कुछ करोगे तो उतना सेम रहेगा बिकॉज़ K3 वैल्यू इज मच लोअर. सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ concentration of Ag plus ion we can take third step that K3 will be how much? Concentration of Ag plus into thiosulfate ion कितना है? 0.358 common in all the equations because second third step से क्या होगा? Concentration will be coming very low of thiosulfate ions and the decrease by common ion effect. काफी कम पहले से होते हैं और कम होंगे तो क्या होगा? Neglect them compared to first one. Divide by concentration of AgS2O3 negative कितना है? 3.3 into 10 to the minus 5. K3 आपको पता है 1.5 into 10 to the minus 9. So from here concentration of Ag plus ions on solving कितना आएगा? देख लीजिए K3 दिया है 1.5 into 10 to the minus 9 into 3.3 into 10 to the minus 5 divided by 0.358. This gives the concentration of Ag plus ions. You can find out on calculation. This value should come 1.38 into 10 to the minus 13 as your last answer. This value should come 1.38 into 10 to the minus 13 molar concentration of Ag plus ions. I hope it is clear.
इसमें देखिए हमने क्या किया है, पहला वैल्यू ऑफ K1 K2 K3 आपने कंपेयर किया तो K1 का वैल्यू हाईएस्ट है, तो यहाँ पर हाईएस्ट है और कितना है, गुड इनफ, बहुत कम नहीं है। तो उससे क्या होगा कि reaction will go to forward direction to sufficient extent, meaning compared to 1 x cannot be negligible, पहला point। if x is not negligible हम x निकालते हैं by solving quadratic equation। अब निकालते हैं x का वैल्यू, ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। सेकंड रीजन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ थायोसल्फेट आयंस विल बी कॉमन, सभी में कॉमन रहेगा। क्यों? क्योंकि K1 का वैल्यू हाईएस्ट था, K2 K3 का वैल्यू काफी कम है। अगर इनका वैल्यू कम है तो क्या होगा, ये रिएक्शन क्या करेंगे, आपका रिएक्शन जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसका वैल्यू कम होगा इस केस के कंपैरिजन में। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट देम कंफर्टेबली कंपेयर टू इसके, ये दोनों क्या होंगे, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया एंड वी कैन टेक थायोसल्फेट आयंस कॉमन सेम इन ऑल द इक्वेशंस, कितना 0.358 सेम। इसका कंसंट्रेशन सेम यहां करना है, तो यहां से क्या निकाल पाएंगे, K2 का वैल्यू सेम होगा इसके बराबर, और ये कितना है, निकल जाएगा। Ag आयंस कहां से निकालेंगे, लास्ट एक्सप्रेशन से, K3 का एक्सप्रेशन से। तो ऑन चेक आप कर सकते हैं निकालने के बाद यहां पर द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस विल कम 1.38 into 10 to power minus 13 मोलर। ठीक है ना, तो सारा बाहर निकल गया आंसर से, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, तो इन दिस केस क्वेश्चन में भी गिवन लाइक comprehension type question asking 2-3 bits in the exams। ओके ओके, now next question देखिए, a solution containing both zinc plus 2 ions and manganese plus 2 ions, a solution containing both Zn plus 2 and manganese plus 2 at a concentration of 0.01 molar, at a concentration of 0.01 molar is saturated with 0.1 molar H2S gas, 0.1 molar H2S, full stop। if the KSP of ZnS is 10 to the minus 22 and KSP of MnS is 5.6 into 10 to the minus 16, 5.6 into 10 to the power minus 16, then at what pH will MnS just begins to precipitate, full stop। under these conditions what is the concentration of zinc plus 2 ion remaining in solution? Under these conditions what is concentration of zinc plus 2 ion remaining in solution? Concentration of zinc plus 2 ion remaining in solution. Here given for the reaction, given for H2S, given 2 H plus ions plus sulfide ions, Kc value is given 1.1 into 10 to the power minus 21. It is given to you. Given for H2S will dissociate to give H plus ions plus sulfide ions. Kc value is 1.1 into 10 to the power minus 21. It's given to you. So that's the question. You try yourself and then we see solution. Yeah. Now let us come on solution part. Now in this question to solve, हमारे पास दो पार्ट निकालना है। एक तो निकालना है pH, the pH at which MnS begins to precipitate,
देखिए आपको दिया है सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 आयंस एंड मैंगनीज प्लस 2 आयंस. In the question what information given, concentration of zinc plus 2 ion and manganese plus 2 ion, concentration दिया है आपका 0.01 मोलर. Now when concentration given 0.01 मोलर, निकालना pH है. pH कहाँ से निकालेंगे? For pH हमारे पास ये इक्वेशन यूज करेंगे. MnS का purity के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सल्फाइड आयंस. सल्फाइड आयंस कहाँ से आएंगे? इस इक्वेशन से सल्फाइड आयंस को आएंगे. सल्फाइड आयंस कहां से आएंगे? इस इक्वेशन से. आपको Kc का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, सल्फाइड आप निकाल पाएंगे Ksp के इंफॉर्मेशन से भी. वही सल्फाइड आप यहां पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो आपका निकल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड देन pH फॉर फर्स्ट पार्ट. तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर we will solve in two parts, two bits. To solve first part, let us take to for precipitation of MnS, what is concentration of sulfide ion required in solution? It is Ksp of MnS divided by concentration of manganese plus 2. What is Ksp of MnS? 5.6 into 10 to power minus 16. What is manganese plus 2 ions? Concentration कितना दिया क्वेश्चन में? 0.01 मोलर. ये हुआ आपका सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन. दैट इज हाउ मच? 5.6 into 10 to the minus 14 molar. Now from expression of this H2S, what is Kc expression of H2S? Dissociation कितना है? Concentration of HN square into sulfide ions divided by H2S. यहाँ पर Kc का वैल्यू कितना दिया है? बहुत कम है. अगर Kc का वैल्यू बहुत कम है तो क्या होगा? रिएक्शन प्रैक्टिकली विल नॉट गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2S विल रिमेन प्रैक्टिकली सेम 0.1 मोलर. आपका इतना है ही सल्फाइड आयंस आपको दिया है क्वेश्चन में. Kc इन द क्वेश्चन गिवन 1.1 into 10 to power minus 21. आपको Kc की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, सो यहां से क्या निकाल पाएंगे? We can find the concentration of hydrogen plus ions. ठीक है ना? तो आप निकाल पाएंगे concentration of H plus ions on solving this. आप निकाल लीजिए कितना आएगा इसमें concentration. ये आपका 4.43 into 10 to power minus 5. ये क्या है? concentration of H plus ions. Then what is pH? 5 minus log this value 4.43. So pH will become 4.35 as your answer. On solving आप चेक कर लीजिए. Solution of pH equal to 4.35 as your first answer. pH हमारा निकल गया यहाँ से. Simple concept है कि what the pH के लिए आपको HN चाहिए. कहाँ से आएगा HN? इस इक्वेशन से. For precipitation आपको चाहिए सल्फाइड आयंस, वो कहाँ से आएंगे? इसी इक्वेशन से. और Ksp के लिए कितना चाहिए? हम निकालेंगे पहले वो कि लिखा ना just begins to precipitate means ionic product will be just equal to Ksp and start crossing Ksp. You can just equate. तो उस टाइम पे कितना आएगा सल्फाइड आयंस? तो Ksp of MnS divided by manganese plus 2 ions आपको मिल जाएगा सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन. On solving from here K1 आपका हम निकाल चुके हैं, आपको दिया है क्वेश्चन में H2S प्रैक्टिकली सेम रहेगा क्योंकि Kc का वैल्यू बहुत कम है. Kc का वैल्यू क्वेश्चन में बहुत कम है. उसका मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकली रिएक्शन विल नॉट गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हम निकाल पाएंगे इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस. वंस वी नो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस देन pH of solution we can find out. So that coming answer on solving. First part is pH is 4.35. Your first answer. Now coming on second part लिखा है also find the concentration of zinc plus 2 ion at this point. Now when MnS begins to precipitate, then what is concentration of sulfide ions? In second part, when MnS begins to precipitate, we can take sulfide ions concentration is how much? 5.6 into 10 to power minus 14 molar.
ये क्या है, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। एट दिस पॉइंट what can be taken concentration of Zn plus 2 ions? It is Ksp of ZnS divided by concentration of sulfide ions 5.6 into 10 to power minus 14। तो कितना दिया Ksp of ZnS 10 to power minus 22 by this value। Nearly will come on solving 1.8 something like that, 1.79 into 10 to power minus कितना आएगा 23 कर लो, 23 minus this 9 is your answer। Zinc plus 2 ion in solution remaining will be coming 1.79 into 10 to power minus 9 moles per liter। That is your answer also। So there are two answers in the question। I hope it is clear। पहले क्या दिया है हमको, KSP के नॉलेज से सल्फाइड आयन निकाल सकते हैं और फिर HNs इस इक्वेशन से। When manganese sulfide begins to precipitate, at that point how much will be sulfide ions? Same sulfide ions we will take in the KSP expression of ZnS। आप उसको यूज करेंगे यहाँ पर जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो आप निकाल पाएंगे आंसर आराम से दोनों। ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन द KSP of SrF2 strontium fluoride, KSP of SrF2 is given 2.8 into 10 to power minus 9। Given the KSP of SrF2 2.8 into 10 to power minus 9 at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, full stop। How much NaF, how much sodium fluoride, how much NaF should be added to 100 ml of a solution having 100 ml of a solution having initially strontium plus 2 ions concentration 0.016 molar to decrease to 2.5 into 10 to power minus 3 molar, to decrease it to 10 to power minus 2.5 into 10 to power minus 3 molar। Okay, that's the question। KSP of SrF2 given 2.8 into 10 to power minus 9 at 25 degrees Celsius। How much of NaF should be added to 100 ml of the solution having initially strontium plus 2 ions 0.016 molar to decrease it to 2.5 into 10 to power minus 3 molar। That's the question given to you। Okay, try this question yourself। हो गया इसका आंसर। Now let's come on solution part। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में कि फॉर व्हाट पर्पज वी रिक्वायर NaF। Solution initially strontium at 0.016 molar, they are decreased to 2.5 into 10 to power minus 3 molar। How the strontium plus 2 ions in solution can be decreased? How the strontium plus 2 ion concentration in solution can be decreased? Only one way is taken by precipitation of excess strontium plus 2 ions। जितना रिक्वायर्ड नहीं है या इतने के होने के बाद जो डिफरेंस है वो क्या करेगा, वो बनेगा PPT
और पीपी टर्म के बाहर हो जाए सोल्यूशन से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, देखिए NaF इज रिक्वायर्ड फॉर टू पर्पज, NaF इज रिक्वायर्ड फॉर टू पर्पज, वन टू डिक्रीज strontium plus 2 ions concentration, how? By PPT formation, and second to maintain solution saturated. देखिए in the beginning when we add some NaF, PPT will not form immediately. When we add small amount of NaF, there is no precipitation. Precipitation will take place only when ionic product exceeds solubility product. PPT कब बनेगा? Only when ionic product exceeds solubility product. तो आपको चेक करना है solubility product को मेंटेन करने के लिए कितना आपको F नेगेटिव रिक्वायर्ड होगा, ये हमारा सेकंड पर्पज है। तो लेट अस फाइंड फॉर ईच पर्पज हाउ मच रिक्वायर्ड NaF and then total NaF required how much add कर लेंगे moles, then we can take moles into molar weight can give the weight of NaF. Let us see to solve first part of the question. In first part of question strontium plus 2 कितना दिया है, when they decrease they form PPT of SrF2. Initially आपको दिया है 0.016 मोलर, I can write 16 into 10 to power minus 3 molar. Let's say X amount consumed. So they require how much NaF? 2x required amount for reaction. At the end, how much is remaining concentration of strontium plus 2 ion? 2.5 into 10 to power minus 3 molar. ये आपको दिया हुआ है. From here you can find the value of X. कितना आएगा? 16 minus 2.5, 13.5 into 10 to power minus 3 molar. That means for first purpose required how much F negative ion? कितना required हुआ? Moles per liter में 2x. That is 27. इसका डबल किया 27 into 10 to power minus 3 molar. ये हमारा रिक्वायर्ड है F नेगेटिव आयन फर्स्ट स्टेप के लिए, कि इसका जो डिफरेंस था यहाँ पर 13.5 into 10 to power minus 3 molar of strontium plus 2 ions, they will form precipitate on combining with the strontium plus 2 ions. समझ में आया? इतना आपका 2x रिक्वायर्ड था F नेगेटिव आयन एक स्टेप के लिए. अब आते हैं सेकंड स्टेप के लिए. देखिए when solution contain this much of strontium plus 2 ion, to maintain that also we require some F negative ion. PPT का बनता है when ionic product exceeds solubility product. PPT will not form immediately on just mixing. So to find second part, what can be taken? Concentration of F negative ion, it is Ksp of SrF2 divided by concentration of strontium plus 2 ion which are remaining in solution का स्क्वायर रूट. आपको सब कुछ दिया है. Ksp आपको दिया है strontium chloride का 2.8 into 10 to power minus 9, remaining given strontium plus 2 ions 2.5 into 10 to power minus 3. तो कितना आएगा? Nearly it is coming here 1.1 into 10 to power minus कितना होगा ये 6 का minus 3 हो गया. For second part we require F negative ion concentration this much. अब चेक करिए 2.8 by 2.5 roughly आपका 1.1 आएगा. 1.1 into 10 to the minus 3. So now total we require how much F negative ion? Total ये मोलरिटी निकाला हमने 27 plus 1.1 into 10 to the minus 3 मोलर. ये मोलरिटी निकाल दिया हमने. तो मोल्स कितना होगा? देखिए आपको एक पार्ट और दिया क्वेश्चन में, हाउ मच NaF शुड बी एडेड टू सॉल्यूशन वॉल्यूम टेकन इज 100 ml. ये हमारा है मोल्स पर लीटर.
we require this many moles per liter of F negative ion, which is same as we can take NaF also. What is moles required of? Same, it is same as NaF. So what is moles of NaF required for 100 ml solution? ये कितना है? Molarity into volume in liters. 28.1 into 10 to the minus 3 into volume 100 ml. तो this will come 2.181 into 10 to power कितना हो जाएगा ये? -3 by 10 हो गया moles. Then what is the weight of NaF? How to find the weight of NaF? It is moles into molar weight. Moles दिया है 2.81 into 10 to power minus 3. What is molar weight of NaF? कितना होता है molar weight? Na का 23 plus F का 19, that is 42. On solving, this weight should come around 0.1178 gram. The answer, that is the answer also to the question. I have taken some approximation here. You can find accurate answer कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. हमारे पास आपको सोचना है पहले कि अपने आप तो कम होगा नहीं स्ट्रॉन्सियम आयंस. स्ट्रॉन्सियम आयंस कैसे कम हो सकते हैं? बाय पीपीटी फॉर्मेशन. तो हमारे पास वी रिक्वायर F नेगेटिव फॉर टू पर्पस. एक तो है डिक्रीज करना है स्ट्रॉन्सियम आयन को. हाउ दे कैन डिक्रीज? बाय प्रेसिपिटेशन. और सेकंड क्या है? टू मेंटेन सॉल्यूशन सैचुरेटेड. टू मेंटेन सॉल्यूशन सैचुरेटेड, फॉर दैट आल्सो रिक्वायर F नेगेटिव आयंस. तो कितना पीपीटी में चाहिए बनाने के लिए? इतना. और ये है सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, सो दैट सॉल्यूशन स्टिल रिमेन सैचुरेटेड. जितना अमाउंट एक्स्ट्रा था स्ट्रॉन्सियम प्लस 2 आयन का या डिफरेंस है वो बनेगा पीपीटी. वो बनेगा पीपीटी. तो आफ्टर फाइंडिंग टोटल वेट ऑफ NaF रिक्वायर्ड मींस मोल्स निकाल पाएंगे वेट. दैट इज आंसर. ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. What is minimum concentration? Write down the question yourself. लिखिए क्वेश्चन. What is the minimum concentration of ammonia required to prevent AgCl solid from precipitating? AgCl solid from precipitating from 1 liter of solution, from 1 liter of solution containing 0.1 mole of AgNO3 and 0.01 mole of NaCl and 0.01 mole of NaCl. Given the Ksp of AgCl is 1.8 into 10 to power minus 10. Ksp of AgCl is 1.8 into 10 to power minus 10, and Kf for the complex formation is 1.6 into 10 to power 7. Kf is for complex formation 1.6 into 10 to power 7. लिखा क्वेश्चन पूरा. Now try yourself. Now let's come on solution part. You can solve this question. We can see if we calculate the first point given, solution volume is 1 liter. If the volume is 1 liter, that means concentration will be same as number of moles. 0.1 mole, 0.1 mole, 0.1 mole become concentration of AgNO3 and NaCl both. Now when there are concentrations, तो क्या हुआ इसमें? If you calculate ionic product कितना आ रहा है? 10 to power minus 3. They form PPT readily. Since ionic product is much more than Ksp, PPT will form. But लिखा गया PPT will not form. PPT should not form. That means in solution how much can be taken free Ag plus ions? In solution we should have free Ag plus ions. Ksp divided by Cl negative ion concentration कितना होगा? 1.8 into 10 to the power minus 8 molar. Cl दिया है आपको 0.01 mole. Since solution volume is 1 liter, so moles
will be same as molarity of Cl negative ions। देखो ना 0.01 मोल है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 0.01 मोल also indicate 0.01 मोलर concentration of Cl negative ion। तो कितना होगा concentration of Ag plus ions? Ksp of AgCl divided by Cl negative ions concentration। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा concentration of Ag plus ions। अब आते हैं इतना बचना चाहिए, तो दिया तो अपना था स्टार्ट में 0.1 मोलर। व्हाट शुड हैपन टू रेस्ट? रेस्ट शुड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सी रिएक्शन वाइज Ag plus 2 ammonia can form complex Ag NH3 whole twice plus। If I take concentration of ammonia initially A moles per liter, यहाँ पर कितना है 0.1, Kf value is very high। So if I suppose x moles are forming complex, they contain 2x moles, यहाँ कितना आएगा इसमें x moles per liter। Now since the Kf value is very high, so you can assume that the reaction almost goes to completion। In forward direction, when the reaction is going to completion in forward direction, how much can be taken? Value of x nearly 0.1 molar। कैसे? ये 0.1 था, that means almost all the Ag plus ion will form complex। आप देखो ना, how much is concentration free remaining of Ag plus ions? कितना फ्री बचा हुआ है? 0.1 minus x is equal to how much? 1.8 into 10 to the power minus 10। So what is x from here? 0.1 minus 1.8 into 10 to the minus 10, sorry minus 8। ठीक है ना, तो ये कितना होगा? We can take comfortably 0.1 moles per liter। तो how much remains? A minus 0.2। ये आपको निकालना है, ये आपका दे दिया है, कितना होगा फ्री Ag plus ions in solution? इतना है। So from this expression I'm solving here, Kf कितना दिया है? Concentration of this complex 0.1 divided by Ag plus ions, जो फ्री रहेगा solution में 1.8 into 10 to the minus 8 molar into concentration of ammonia square। Kf आपको दिया क्वेश्चन में, Kf आपको दिया क्वेश्चन में 1.6 into 10 to the 7। तो we can solve from here concentration of ammonia। कितना आएगा concentration of ammonia? I'm solving, it is coming 0.589। आप चेक कर लीजिए। और ये कितना आपका आ रहा है? It is given A minus 0.2, सेम है। That is the concentration of ammonia which remain in solution। Concentration of ammonia which remain in solution, that means difference कहाँ पे चला गया? मीन्स आपका डिफरेंस जो भी है वो बनेगा कॉम्प्लेक्स में। तो कितना होना चाहिए अमाउंट? इनिशियल A is taken the ammonia's initial concentration, so we must take concentration of ammonia initially equal to A 0.589 plus 0.2, that is 0.789 moles per liter as your final answer। Out of this A moles 0.2 mole will use in complex formation for 0.1 mole, which is almost undergo complex formation। So solving from here, we get first ammonia in solution remaining, how much will be initial remaining plus 0.2। So at your answer coming here is 0.789। Okay, hello students। So let us continue the problems, advanced problems in chapter ionic equilibrium। Write down next question, लिख लीजिए। देखिए solid AgNO3, solid AgNO3 is gradually added to a solution which is 0.001 molar each
in Cl negative ion, Br negative ions and I negative ions, which is 0.001 molar each in Cl negative, Br negative and I negative ions. First up, calculate. इसमें पर दिया है पार्ट्स दिए हैं. फर्स्ट पार्ट दिया है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus ions, concentration of Ag plus ions to start precipitation of each Cl negative, Br negative and I negative ions. Calculate concentration of Ag plus ions to start precipitation of each Cl negative, Br negative and I negative ions as AgCl, AgBr or AgI. Next part. Which ion is precipitated first. Next bit. Right, next bit. What is the concentration of first ion? Concentration of first ion. First ion when second ion start precipitating. Concentration of first ion when second ion start precipitating. नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयन. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयन व्हेन थर्ड आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयन व्हेन थर्ड आयन स्टार्ट precipitating. You're given the value of Ksp of each compound. Ksp given of AgI, 1.5 into 10 to the power 16. Ksp of AgI is 1.5 into 10 to the power 16. Ksp of AgBr is given 3.3 into 10 to the power 13, and Ksp of AgCl is also given to you 1.8 into 10 to the power minus 10. You got the Ksp of AgI 1.5 into 10 to the power minus 16. Ksp of AgBr is 3.3 into 10 to the power minus 13, and Ksp of AgCl is 1.8 into 10 to the power minus 10. That is given to you information. Okay, use this information and try this question yourself. Okay, now let us come on solution part. To solve this question, we will take some information to be used here. First part देखते हैं. To solve first part, देखिए हमारा कंडीशन क्या होता है? When the salt start precipitating, when ionic product is just equal to Ksp. When ionic product equal to Ksp, till this point PPT will not form. The moment ionic product start exceeding Ksp, the salt start precipitation. So in solving such question, we just equate Ksp value equal to ionic product. We equate the value of Ksp to ionic product, and in that case we can find the concentration of Ag plus ions required for AgCl. कितना आएगा? Ksp of AgCl divided by concentration of Cl negative ions. तो कितना दिया Ksp of AgCl? 1.8 into 10 to the power minus 10.
भाई Cl दिया है 10 to power minus 3, ठीक है ना, 10.001 मोल, तो आई कैन राइट हियर 1.8 into 10 to power minus 7 molar. It is concentration of Ag plus ion required for precipitation of AgCl or Cl negative ions. Now, in solving first bit, then similarly, what can be taken? Ag plus ions, concentration for precipitation of AgBr, it is Ksp of AgBr 3.3 into 10 to power minus 13 divided by 10 to power minus 3, that is how much coming? 3.3 into 10 to power minus 10 moles per liter. Then we can find concentration of Ag plus ions for precipitation of AgI, कितना होगा? Ksp of AgI 1.5 into 10 to power minus 16 divided by 10 to power minus 3, कितना आएगा सॉल्व करने पे? 1.5 into 10 to power minus 13 molar. So in this question we can find the concentration required of Ag plus ions for precipitation of Cl negative as AgCl, Br negative और I negative as AgBr और AgI respectively, कितना आएगा निकालने पर? इतना आएगा. That is our first part done. Concentration of Ag plus ions for precipitation or starting the precipitation of Cl, Br, I negative ions as respective their silver salts. समझ में आया पहला पार्ट? इजी था. अब आते हैं which ion will precipitate first. देखिए आपको सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है? सोल्यूशन कंटेन Cl नेगेटिव, Br माइनस और I नेगेटिव. सोर्स कैन बी लाइक NaCl, NaBr, NaI व्हाटएवर. आपका सोल्यूशन में आयंस दिए हैं जिसमें रिक्वायर्ड है, वो कंसंट्रेशन है 10 to power minus 3 and then we are adding from outside solid AgNO3. तो the lowest value will approach first. The lowest value will approach first out of 3 salts. Whichever salt required lowest concentration of Ag plus ions will form PBT first. So can compare. For AgCl we require this much of Ag ions. For Br negative we require this much of Ag plus ions. For I negative ion we require this much of Ag plus ions. This is lowest value. It is lowest value. So this AgI or I negative ion will form PBT first. If I write here the order of precipitation, क्या ऑर्डर है इसमें? I negative first, then Br minus and finally Cl minus. So this I negative required lowest, means first highest capacity होगा PBT बनाने का. It is called first ion. This is called then second ion and Cl is then called third ion. अब देख लीजिए यहाँ पर for precipitation of I negative ion we require lowest concentration of Ag plus. So it is form PBT first. After that precipitation occur of Br negative ion which require concentration of Ag plus ions more than that of I negative ion but less compared to that of Cl negative ion. So Br negative ion will be called as second ion because for doing the part third or part 4 we need this information. Meaning क्या है? फर्स्ट आयन क्या होगा, सेकंड आयन क्या होगा, थर्ड आयन क्या होगा. ये इसका मीनिंग होता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि किस आयन का पीपीटी पहले बनेगा उसे बोलेंगे फर्स्ट आयन, फिर अगले का किसका बनेगा पीपीटी उसे बोलेंगे सेकंड आयन, फिर लास्ट में कौन सा बनेगा पीपीटी? तीन ही आपको आयन दिए हैं तो इसे बोलेंगे थर्ड आयन. ये इस पॉइंट का मीनिंग है. सेकंड पार्ट का लिखा है ना, विच आयन फॉर्म पीपीटी फर्स्ट, उसका आंसर क्या आएगा? आई नेगेटिव आयन फॉर्म पीपीटी फर्स्ट. इतना हमारा आंसर था, हो गया. बट आपको अगला पार्ट करना है 3 और 4 के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि which ion can be called first ion and which ion will be called second ion, which ion will be called as third ion. तो हमारे पास I नेगेटिव का पीपीटी पहले बनेगा, इसे बोलेंगे फर्स्ट आयन, ये बोलेंगे सेकंड आयन, ये बोलेंगे थर्ड आयन. समझ आ गया वाला पॉइंट. अब आते हैं क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए. फॉर सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, लेट्स से थर्ड पार्ट, हमें क्या लिखा थर्ड पार्ट में? कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन
when second ion start precipitation. What is second ion taken here? Br negative ion. So when second ion that is Br negative ion start precipitation, then what is concentration of Ag plus ions in solution? कितना है 3.3 into 10 to power minus 10. At this point what can be concentration of Cl negative ions? अब देख लीजिए, तो what is concentration of Cl negative ion? That is first ion कितना आएगा Ksp of AgCl divided by concentration of Ag plus ions. What is Ksp of AgCl? Sorry, when second ion Br negative, then concentration of first ion for the Cl negative, I negative ion. Sorry, it's I negative ions. In this case, first ion for the I negative ion. So when second ion is what given here, Br negative ion start precipitation, then what is first ion? Ag plus ions कितना है केस में आपका इतना दिया है. Then what is concentration remaining of first ion? Here first ion taken is I negative ion. Okay, so concentration कितना आएगा? I negative का Ksp of AgI divided by concentration of AgI at this point. So what is Ksp of AgI? 1.5 into 10 to the power minus 16 divided by Ag plus ion 3.3 into 10 to the power minus 10 molar. That is your answer of bit third. Second number already कर चुका है. Now coming on fourth bit. What fourth है? What is concentration of first and second ion when third ion start precipitating? What is third ion taken here? Cl negative ion. So when Cl negative ion, that is third ion, start precipitation, then when third ion Cl negative ion start precipitation, then what is concentration of Ag plus ions in solution? 1.8 into 10 to the power minus 7 molar. At this point, what is concentration of I negative ion? It is Ksp of AgI 1.5 into 10 to the power minus 16 divided by 1.8 into 10 to the power minus 7 molar. Similarly, what is concentration of what is second ion taken? Br negative ion. At this point, what is concentration of Br negative ion? It is Ksp of AgBr 3.3 into 10 to the power minus कितना है 13 divided by 1.8 into 10 to the power minus 7 molar. That is your answers. ठीक है ना? That are answers for the part 4. In this question, आपको just recapping the information because it is a question or concept we are using in selective precipitation. For the selective precipitation of ions or compound, we are using this concept. Okay, when solution contain all three ions, then we are adding from outside solid AgNO3. So in the first part of question, we require to find the concentration of Ag plus ions which are required for the precipitation of AgCl, AgBr or AgI of the ions Cl minus, Br minus or I negative ion respectively. So in this case, the first ion is meaning what here? The ion which form PPT first. Which ion form PPT first? Whichever required lowest concentration of Ag plus ion. Because from outside we are adding AgNO3 solid. We are adding Ag plus ions from outside. So whichever value is reached first will form PPT first. तो lowest value will always approach first, फिर higher, फिर highest. तो ये हुआ order of precipitation I minus, Br minus, Cl minus. I negative is called first ion,
because it required lowest concentration of Ag plus ions, so we'll form PPT first, then Br then Cl. तो Er का पहला पार्ट था आइडेंटिफिकेशन के लिए कि फर्स्ट आयन का मीनिंग क्या है, सेकंड आयन का मीनिंग क्या है और थर्ड आयन का मीनिंग क्या है. आई होप ये आपका पॉइंट समझ में आया. अब आते हैं पार्ट थर्ड में. व्हेन सेकंड आयन, व्हाट इज सेकंड आयन टेकन, Br माइनस. आपको ये पॉइंट हेल्प करेगा. स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, देन व्हाट इज Ag प्लस आयंस इन सॉल्यूशन, इतना है. इस पॉइंट पर हमारा कितना कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन का आपको निकालना. फर्स्ट आयन मींस I नेगेटिव का कितना हुआ, Ksp ऑफ AgI by Ag प्लस आयन एट दिस पॉइंट. फिर अगला पार्ट है व्हेन Cl नेगेटिव. व्हाट इज Cl नेगेटिव हियर, थर्ड आयन. व्हेन थर्ड आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, then solution of how much concentration of Ag plus ions, 1.8 into 10 to power minus 7 मोलर. यहाँ से आया हुआ है सेम वैल्यू. तो इस पॉइंट पर कितना हुआ, I नेगेटिव आयन बिकॉज वो फर्स्ट आयन है. तो Ksp of AgI डिवाइडेड बाय Ag plus ion at this point, and Br कितना हुआ इस पॉइंट पर 3.3 means Ksp of Ag Br divided by concentration of Ag plus ion at this point become your answers. Okay.